So yesterday we have gone through few MCQs in the data warehouse. Today also we try to continue with that. Okay, so let's start with is my screen visible to all of you? Yes, sir. It's visible. Okay. Well then, let's start. So I think question number 16 is also there. Okay. So starting from question number 16, as we have covered up to question number 15 in the last lecture. So the first question for today is the star schema is composed of fill in the blank fact table. Means how many fact table is there in the star schema? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 1. 4. 1. One. Right? Of course, One. star schema will have 1. one fact table. Okay, correct answer. But what is fact table? Fact table क्या था? If I ask one line definition for fact table, what does it contain? What is fact table? The main central repository. Well, is it related to dimensions? So it contains measures through which it is related to dimension tables. It is pointing to some dimension tables, right? So Yes. we know that the star schema is composed of one fact table, so the correct answer is 1, option A. Coming to the next question, the time horizon in operational environment is. So option A, in the last lecture also we have solved one such question related to the time horizon, right? So first of all, I want to ask you, what do you mean by time horizon? Time horizon क्या है? As in normal case, what does it mean by the term time horizon? Can anybody answer this question? Are you getting my question? What I am asking? Sir, I guess it's time period. It's time Time period. Yeah, partially correct. Anyone else tries to answer this question? Time horizon. Okay, no problem. She guessed it right. But there is a term in front of the time period that is fixed. Okay, Jeta, you are correct, but this is a time period, no doubt, but this is a fixed time period that we have bounded for some operations. Okay, in the yesterday lecture, you have also seen the time horizon for some, I think, data warehouse or like that. But we are now talking about the time horizon in the operational environment. This is a kind of factual question that you need to remember anyhow. Okay, so option A says 30 to 60 days, option B says 60 to 90 days, and option C says 90 to 120 days, and option D says 120 to 150 days. What will be the correct answer? Sir, B 60 to 90. How do you get it? Why this is 60 to 90? See, this is a factual question, so I think without knowing it, we can't answer that. That's why I'm asking you. Anyhow, so please don't Google the question. First, you try to solve it by yourself. Okay, so
इसका मतलब ये है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं भी नहीं कर पाता अगर मुझे इस पार्टिकुलर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट का टाइम होराइजन के बारे में नहीं पता हो तो, ठीक है। तो अभी तो आपने जो कहा कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, 60 to 90 डेज, ठीक है। बट जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप का आएगा वो खुद सोल्व करना, गूगल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर गलत भी होता तो मेरे कोई बुरा नहीं लगता, बट सही होगा तो मुझे थोड़ा सा डाउट होगा कि आपने सही खुद किया है या गूगल किया है, राइट। सो द ऑप्शन इज ऑफ कोर्स 60 to 90 days. That is the time horizon for operational environment. A time horizon, also known as a planning horizon, is a fixed point of time in the future at which certain processes will be evaluated or assumed to be end. ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम है, टाइम पीरियड है, और कैन से दैट 60 to 90 3 महीने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा, राइट। तो इस पार्टिकुलर ऑपरेशन एनवायरनमेंट के केस में क्या होगा कि 60 to 90 डेज में उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज बी। देन the key used in operational environment may not have an element of, again this is a conceptual based question, please try to solve it by yourself, okay. A, time, B, cost, C, frequency, D, quality. What will be the K used in operational environment that is not having an element of out of this four? Your time started now. क्या होगा इसका आंसर, खुद ट्राई करो, ठीक है। बस गूगल टाइप मत करना, हाँ, गूगल सर्चिंग में टाइप मत करना, खुद ट्राई करो उसको। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में क्या नहीं होगा, ठीक है। तो टाइम, कॉस्ट, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, क्या लगता है आपको क्या नहीं हो सकता? कम ऑन फास्ट, एटलीस्ट गेस यार, गलत होगा तो मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा आप लोगों को। Sir, I guess frequency, but I'm not sure. राइट, प्लीज ट्राई, मतलब क्या है, आप ठीक कोशिश तो करो, खुद ट्राई करो, ठीक है। चाहे सही हो या गलत हो, हम ऐसे भी सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। बट वो गलत है कि आप इसे चार्ज करके वो आंसर बताओगे, दैट इज नॉट करेक्ट। बट फ्रॉम योर साइड इफ यू आर करेक्टली आंसरिंग इट, दैट इज वेरी गुड। एनीवन एल्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। आज राजू, अंकित, कहाँ हो आप लोग? कैशवी है सर। तो बताओ यार, कुछ तो गेस करो। Sir, quality. So quality, okay, option D. Any more option? Answer is time. The key used in operational environment may not have an element of time. Now यहाँ पे time क्यों आया? Can you guess it? Please. We are discussing here. You give your point of view. I want to know that. फोर लोगों में से कोई एक भी नहीं है क्या जो इसका गेस और कुछ तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे? हाँ, yes. Okay. I guess it's already fixed. I mean, time horizon has already fixed 6 to 90 days, so time is not equal. Your voice is not clear. Anyhow, I have kept it as a homework for you. You'll tell me why time is not considered. Okay. तो इसका आंसर आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 18 का क्यों ऑप्शन ए हुआ, आप लोग बताओगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, data can be updated in
Option A, data warehouse. Option B, data mining. Option C, operational. Option D, informational. Operational. 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 Okay. My question is as always, why operational? Q. सर ऑपरेशनल में रियल टाइम डाटा से वर्क करते तो ऑब्वियसली अपडेट कर सकते सर. Right answer. So option C is correct with the correct explanation. Who is that? Who have explained this? सर अब्दुल. Abdul, you are correct. That's the correct answer. Question number 20. Record cannot be updated in fill in the blank. Option A, OLTP. Data warehouse. Option B, files. Option C, RDBMS. Option D, data warehouse. Record कहाँ पे Data update? warehouse. Data warehouse. Why? सर एनालिटिकल है, OLP एनालिटिकल डाटा वेयरहाउस में सिर्फ सर वहाँ पे नहीं होता सर, अपडेट नहीं कर सकते. Very good. Okay, that's correct because actually the summarized data we are putting in the data warehouse. There is no meaning of that Historic updating the data. data. Okay. Yeah, historic data and the historic summarized data that we are putting in data warehouse for the analysis purpose. So we are not going to update it anyway. So correct answer is option D, that is data warehouse. Very good. Next question. The source of all data warehouse data is the option A, operational environment. Option B, informal environment. Option C, formal environment. Option D, technology environment. What will be the correct answer? Just a minute. Hello. Hello. Oh, Paras da. Oh, কওকচোন. মই এই ক্লাছ এটা লৈ আছো জাস্ট আফটাৰ 15 মিনিটছত মই আহি আছো হা আপোনাৰ ওচৰলৈ 15 মিনিটৰ পাছতে আহি আছো. Hello. Yeah. So what will be the, sorry for the interference. What is the correct option for this? क्या पूछ रहा है कि source of all data warehouse data is the option A, informal. Oh, sorry, optional. Option B, informal. Option C, formal, and option D, technology. Very straightforward question. Time started now. क्या होगा और डाटा वेयरहाउस का डाटा का सोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली थोड़ा कुछ सोचो, जहाँ पे आप अपडेट करते हो, जहाँ पे डाटा नया वहाँ से लाके आप डाटा वेयरहाउस में रखते हो. What will be the answer? Sir, operational. Very good. Who is that? Sir, Raju. Okay, Raju. What's your explanation for this part? सर आपने अभी बोला मतलब अपडेट वगैरह करता है तो इसलिए सर ऑपरेशनल वाला एनवायरनमेंट को सिलेक्ट किया सर. हाँ, क्योंकि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सर, का डेटा. हाँ, बोलो. सर उसमें मतलब क्रूड वाला फंक्शनैलिटी वगैरह है ना सर, इसलिए सर कि क्रिएट अपडेट सब उसमें हो सकता है सर. यस, ये पूछ रहा है कि सीधा क्वेश्चन है सोर्स ऑफ ऑल डाटा डाटा. यार आप कहीं से भी तो आप डाटा ला रहे हो ना. देयर आर डिफरेंट sources from which you are collecting the data, you are gathering the data, right? So that is operational environment where actually those data are there, right? So option A is the correct answer. Very good explanation by Raju. Next question. Data warehouse contains fill in the blank data that is never found in the operational environment. Option A, normalized. Summary. Option B, Summary. informational. Summary. Option D. Summary. Okay, why summary? सर समराइज डाटा होता है ना डाटा वेयरहाउस में. So historic summarized data होते हैं. Okay. So what about normalize and this denormalize? So normalized to normalize tables বোৰ reduce কৰি দিয়ে ন, but ইয়াতটো নহয়. Reduction. normalize আমি কি কৰো? What we have done for the normalization, we So are trying duplicate to data. remove the, yeah, we are trying to remove the redundancy, right? So there, when you go for, do note one thing, maybe ask in examination, when we go for removing the redundancy,
the number of tables may be increase or decrease. This question Increase. is for Number all of people increase. The increase. तो इसीलिए Increase. जो आपने कहा था तो please note it down. Okay, when we go for normalization, the number of tables will be increased, not decreased. Table will বাঢ়ি যাব, কমি নাযায়. Okay, so normalize, denormalize, that is normalize is related to something we have discussed in the data models, right? Now, in this case, the correct option is, of course, summary data, because this is what data warehouse we are talking about. Very good. All of you who have given the correct answers are correct. Then, Bill Inmon has estimated, this is again a factual question, fill in the blank of the time required to build a data warehouse is consumed in the conversion process. Option A 10%, option B 20%, option C 40%, option D 80%. अब इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले मुझे ये बताओ, who is Bill Inmon? Come on, first. I think I have discussed this. Inmon sir वो top down approach का जो था data warehouse. Inmon's approach. Who is that? सर वो Ankit, top I down think. approach का जो दिया था सर concept top down approach का. I got your answer. You are Ankit, na? Okay. Yes sir. Yeah, okay, good, very good. What about the other guys? Who is Bill Inmon according to you? Sir, same as Same, it's okay. ठीक है sir. बाकी সকলে কি কবা? What about the other guys, please? I think more than 40 students are in today's class. Okay, they don't want to say anything. Actually, they don't know about Bill Inmon. Very good. So, Raju, are you there? Yes sir. तो आप तो कम से कम बता दो, बाकी लोगों की तरह मत बनो. आप बताओ कि बिल इनमन कौन है? सर हम लोग ने जब आर्किटेक्चर किया था सर, तब इसका हम लोग ने पढ़ा था बिल इनमॉन एंड देन आपका किमॉन सर, एक मतलब दो आर्किटेक्चर Kimon पढ़ा था पे इन दोनों Kimball. के. हाँ किम्बर, हाँ मेरे को नाम याद नहीं आता. ठीक है. At least I got the thick responses. Ankit, Raju, Joyita. Very good, all of you. So answer in this case, again I have told you that this is a factual question, so don't just get in the tab. अगर सही आंसर देता तो मेरे समझ में आ जाता कि आप लोग इसको क्या कर रहे हो. ठीक है, तो आंसर विल बी 80%. So according to Bill हाँ Inmon, सर 80% होगा. हाँ, the estimated 80% of the time required to build a data warehouse is consumed in the conversion process. Again the question that why 80%? 80% मतलब क्या है? Sir, इनमें से ये जितने ऑप्शन पे दिया है सबसे ज्यादा वाला. हाँ बोलो. हाँ वो top down approach में सर cost and time ज्यादा लगता है इसीलिए सर, तो 80% ज्यादा है तो 80% ही होगा. Right, very good answer. That's the correct explanation. Okay, good, Ankit. So next question, detailed data in single fact table is otherwise known as fill in the blank: monoatomic, diatomic, atomic, multiatomic. Come on, answer this first. सिंगल फैक्ट टेबल में जो डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल फैक्ट टेबल जिसमें हर एक इसमें डबल वैल्यू तो हम नहीं रखेंगे, राइट? सो दैट विल बी योर एटॉमिक डेटा. ठीक है, I know that you guys are already aware with that what is atomic data, that because we have discussed in our DBMS class. So detailed data in single fact table is otherwise known as atomic data. Next question, fill in the blank test is used in an online transaction processing environment. Option A mega, option B micro, option C macro, and option D ACID. Come on, answer this fast. I want the response within 10 seconds, please. ACID. Very good, Joyita. You are correct. ACID test is used because why? This is
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये किसकी बात कर रहे हैं हम, वी हैव टू मेंटेन सम प्रॉपर्टी दैट इज अंडर ए सीट प्रॉपर्टी। आप मुझे बाकी लोग बताओ, व्हाट डज द ए स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज दिस सी स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज दिस आई एंड डी स्टैंड्स फॉर? प्लीज कम ऑन, गिव द Sir, रेस्पॉन्स विद इन 10 seconds. atomicity, Atomicity, consistency, isolation, consistency, integrity, and durability. durability. Very good. You guys are smart, no doubt. Thank you for the correct answer. So coming to the next question, fill in the blank is a good alternative to star schema. Option A, star. Option B, snowflake. Option C, fact constellation. Option C, star snowflake schema. इन चारों में से कौन सा स्टार स्कीमा का सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा? ठीक है, बताओ। कम ऑन फास्ट। स्टार स्कीमा खुद का तो ऑल्टरनेटिव नहीं होगा ना। ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड। ओके, सो ऑप्शन बी स्नोफ्लेक, ऑप्शन सी फैक्ट कॉन्स्टेलेशन। ऑप्शन डी को छोड़ दो क्योंकि एक हाइब्रिड अप्रोच है। सो ऑप्शन बी स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या था? हाँ बोलो। फैक्ट कॉन्स्टेलेशन। क्यों? व्हाई फैक्ट कॉन्स्टेलेशन? सब फैक्ट कॉन्स्टेलेशन में मल्टी डायमेंशनल टेबल इंप्लीमेंट करता है और स्टार स्कीमा में भी सिर्फ वन डायमेंशनल टेबल बनाता है या इंप्लीमेंट करता है। और स्नोफ्लेक तो नहीं होगा क्योंकि वो एक मतलब एप्लीकेशन, वो एक प्लेटफॉर्म है, डाटा प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं क्लाउड का। और स्टार स्नोफ्लेक स्कीमा के बारे में नहीं पता। देखो, आपका आंसर तो करेक्ट है बट आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं। योर एक्सप्लेनेशन इज not correct because this schema, all the schema is actually talking about multi-dimensional view, right? So यहाँ पे जितने भी schema है, we all are talking about that, all are talking about the multi-dimensional schema. तो क्यों ये आपने जो कहा fact constellation good alternative है, बताओ। ऑप्शन ये ठीक है, मैंने आंसर बता दिया। आंसर इज सी ऑफ कोर्स, फैक्ट कॉन्स्टेलेशन। बट रीजन बताओ जल्दी। जिसको समझ में आया था स्टार, स्नोफ्लेक और फैक्ट कॉन्स्टेलेशन, वो सही आंसर दे सकते हैं इसमें, बताओ। यार तीनों स्कीमा मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के सहित बताया था सर उसमें। हाँ बोलो। हाँ सर, फैक्ट कॉन्स्टेलेशन में सर हम लोग का मोर देन वन फैक्ट टेबल हम लोग का क्रिएट होता है सर, इसलिए शायद से वो होगा सर। हम लोग का मतलब डायमेंशन वाला पार्ट को हम लोग ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं सर इसमें। मतलब इसमें स्नोफ्लेक्स का कॉम्बिनेशन और स्टार का भी आता है ना सर। बस ये आंसर सही है, बस थोड़ा सा आप बोलने में थोड़ा ये कर रहे हो। यू आर वेरी गुड, योर आंसर इज ऑफ कोर्स करेक्ट बिकॉज फैक्ट कॉन्स्टेलेशन आप अगर ध्यान से कंपेयर करोगे स्टार स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टेलेशन तो क्या दिखाई देगा? स्टार स्कीमा का थोड़ा सा एडवांस वर्जन फैक्ट कॉन्स्टेलेशन है कि नहीं, जहां पे मोर देन वन फैक्ट टेबल की बात कर रहे हैं हम, राइट? सो दैट्स व्हाई फैक्ट कॉन्स्टेलेशन कैन बी ट्रीटेड एज एन एडवांस वर्जन ऑफ द स्टार स्कीमा. सो दिस मे एक्ट एज अ गुड alternative to the star schema. You are very correct. Whatever the explanation you have given, I'm really what I can say that I can expect this answer from others actually. Okay, so और बाकी लोगों का क्या व्यूज था ये इसके ऊपर? समझ में आ गया ना मैंने क्या समझाया अभी यहाँ पे? क्यों फैक्ट कॉन्स्टेलेशन हुआ इसमें आंसर? Yes, sir. अंकित, जयता, बुझीपाला? बुझीपालो. Okay, very good. So this Awesome. type of questions may be asked क्योंकि अभी हमने फैक्ट कॉन्स्टेलेशन की बात की है। सपोज स्नोफ्लेक की बात करती तो क्या होगा? क्योंकि ये नहीं आएगा। यहाँ पे हमने फैक्ट टेबल में ज़्यादा ये नहीं किया है फोकस, वहाँ पे डायमेंशन टेबल पे फोकस किया गया है। बट फैक्ट कॉन्स्टेलेशन पे अगेन वी आर फोकसिंग मोर ऑन द फैक्ट टेबल, राइट? Now, question number 27. The biggest drawback of the level indicator in the classical star schema is that it limits fill in the blanks. Option A, quantify. Option B, qualify. Option C, flexibility. And option D, ability. क्या होगा drawback? बताओ.
ऐसा क्या स्टार स्कीमा में नहीं है? प्लीज। जो कि आपका गैलेक्सी स्कीमा फैक्ट कॉन्स्टलेशन में हमने कंसीडर किया है, बट क्लासिकल जो स्टार स्कीमा में वो नहीं है, वो क्या होगा ऑप्शन में? Sir, I guess it's flexibility. If you are guessing, then I want the explanation. Why you are guessing like Sir, that? sir, because ইয়াতো আমি tables বোৰ বহাব এটাই fact table থাকে ন star but এই দুটাতো number of tables বাঢ়ি যায়, so breakdown টো বেছি হয়। Breakdown to besi hoy, breakdown is increase in the other two schemas. That is correct answer, but somehow I cannot consider this as the fully correct answer. Flexibility, of course, answer is correct. Option C, flexibility is correct. But why I didn't get the correct response, correct explanation? फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है क्लासिक स्टार स्कीमा में? व्हाई फ्लेक्सिबिलिटी इज लिमिटेड? कैन एनीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज फास्ट? अरे जो फैक्ट कॉन्स्टलेशन टेबल है, गैलेक्सी स्कीमा है, वहां पे आप डायमेंशन टेबल को और इंक्रीज करते जा रहे हो, राइट? फैक्ट की बात छोड़ दो, बट डायमेंशन टेबल की हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? डायमेंशन टेबल को और मल्टीपल डायमेंशन में ब्रेक कर रहे हो कि नहीं? Joyita is correct, but although the way we need to explain this should be like that, we are breaking the dimension table into again more smaller dimension tables. So when we're breaking down like that, so thereby we are increasing the flexibility, and that is not available in the case of classic star schema. Okay, so that's why option C is the correct option, flexibility. Now question number 28. An operational system is option A, used to run the business in real time and is based on historical data. Option B, used to run the business in real time and is based on current data. Option C, used to support decision making and is based on current data. And option D, used to support decision making and is based on historical data. Come on, what will be the correct option? Sir, B. B is the right answer. Why B? Sir, because operation system works on real-time data, Very good. not on historical data. Right. This is the correct explanation. Option B is correct because operational system is always working on the real-time data, and we are not performing decision making on the real-time data. We are summarizing those data in the data warehouse, and from there we are actually making decision. Okay, so your answer and explanation both are correct. Now question number 29. The active data warehouse architecture includes option A, at least one data mode. Option C, B, that data can be extracted from numerous internal and external sources. Option C, near real-time update, and option D, all of the above. This is a very correct or very simple question. Please give the response quickly. क्या होगा इसका आंसर? Sir, D, all of the above. Right. D is the correct answer. Why D? Sir, তাততো at least data আমাৰ থাকিবই, তাৰপিছত sources to multiple sources পৰা আহিব পাৰে আৰু real time update to হ'বই। D is the correct answer. Explanation is correct. Now coming to the question number 30, reconcile data. What is reconcile data? My first question to this lecture is reconcile data माने की बुझा? What does it mean by reconcile data? आप लोग को reconcile data मतलब क्या समझते हो? Please, you need to comment the answer. Now, what option A says? Data stored in the various operational systems throughout the organization. Option B
says that current data intended to be single source for all decision support systems. Option C, data stored in one operational system in the organization. And option D, data that has been selected and formatted for end user support applications. तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा reconcile data के लिए? See, we have used this term while discussing the data warehouse architecture. So you can recall that and you can answer this question. Okay, last 3 seconds left. 3, 2, 1. Answer is B. That is, reconcile data is the current data intended to be the single source for all decision support system. याद करो, reconciling process मैंने पढ़ाया था आप लोगों को जब data warehouse architecture discuss किया था. ठीक है? Current data intended to be the single source for all decision support system. जहाँ से हम decision making process करते हैं वो उसे reconcile data बोलते हैं. ठीक है? Next question number 31. What is transient data? A data, option A says data in which changes to existing records cause the previous version of the records to be eliminated. Option B says data in which changes to existing records do not cause the previous version of the records to be eliminated. Option C says data that are never altered or deleted once they have been added. And option D says data that are never deleted once they have been added. क्या होगा transient data? Option A. Option A. Why? So because if we update or alter the record, then it gets saved and we cannot get back the previous one. Okay. Any other response? He's correct. Data in which changes to existing records cause the previous versions of the records to be eliminated. Okay, that is the tangent data. Okay, tangent data is a data in which changes to existing records cause the previous version of the records to be eliminated. आप change करोगे तो previous version क्या हो जाएगा? Eliminate हो जाएगा. So these are the questions for today's class, and I have asked 2 questions during the lecture. I will check your answers, your responses, and the time for submission of the answers is 5 p.m. today. Before that, all of you have to submit the answer, right? So I hope this question and answering session is helping you. Sir, can you repeat the question? This is already asked during the lecture. You will get the lecture and go through it. Okay? क्लास के बीच में मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था, वो 2 क्वेश्चन आप लोग जवाब दोगे, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा. Now I am asking you whether these questions are helping you or not. Yes, sir. Yes. Yes, sir. It's helping a lot. Yes, sir. Okay, glad to know that. Okay, thank you then. Have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.